न हो जिसका ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का. If we want to change, then we have to change ourselves. If we want to make a difference, then we have to be the first one to make that difference. And पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है, हमें definitely we have to consult with our MPs. We have to consult with the British government to intervene, to intercede, and at least get some senses. वहाँ पे जो है इस वक्त कहते हैं वो अंधी नगरी है. जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस. मैं वेरी सॉरी, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन पॉलिटिकल बात है क्योंकि हमें दर्द है इस बात का कि जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है 75 साल से लूटा जा रहा है, और 75 साल के बाद अगर कोई आदमी, कोई बंदे का पुत्र, कोई इंसान का बच्चा, कोई ईमानदार शख्स जो दिल में दर्द रखता हो, दिल में जज्बा रखता हो, कौम का दर्द हो, गरीबों का दर्द हो, वो अगर खड़ा होके अपनी कौम के लिए खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसको मदद किया जाता है, उसको नफरत किया जाता है, उसकी आवाज कट जाती है. ये शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, शेम ऑन देम. शर्म की बात है. Where is the democracy? Where is the democracy? कहाँ है जमहूरियत? ये जमहूरियत का खिलाफ होता जा रहा है. We are proud of the democracy in Britain that lives. You go anywhere in the world, like Nasha said, people want to emulate the democracy of Britain because there is a rule of law. There is justice. There is accountability. There is transparency. पिछले दिन एमपीज का मसला हुआ था ना, को 2-4 हज़ार 10,000 पोल इन्होंने ज्यादा निकाली है ना, इनकी अकाउंटेबिलिटी हुई. अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं हुई, बल्कि इतनी ज्यादा हुई कि इनको बाद में थ्रेट हो गए थे कि हमें ये निकाल दे देश से. अब हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, कहने की जरूरत नहीं है, उसने ये जोर बोला कोविन के दरमियान कि हमने पार्टी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में नहीं की. तो क्या हुआ? इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट, उनको लिया गया, इन्वेस्टिगेशन, क्या पता चला कि पार्टी हुई थी या नहीं हुई थी. तो क्या करना पड़ा उसको? अब हमारे मुल्क में ये बात हो तो क्या सोच सकते हैं आप? सोच सकते हैं? शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है. न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों. तुम्हारी दास्तान तक रहेगी दास्तानों में. अब दिल तो मेरा करता है मैं पूरा रात आपके पास दिल की आवाज करूं कि इमरान खान एक सच्चा इंसान है. उसने अपने मुल्क के लिए 50 साल से तो 50 ईयर उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है पॉजिटिव लाइट में. क्या वेस्ट में उसकी जरूरत नहीं है? खुदा की कसम आज जाए तो वो पार्लियामेंट हाउस में, और मैं कहता हूँ बकिंगम पैलेस में उसको जगह दी जाए. वो अपने पाकिस्तान की कौम के लिए कह रहा है कि मैं वहां पे जीऊंगा, वहां पे जीऊंगा और वहां पे मरूंगा. और बाकी जितने हैं थोड़ा सा दर्द होता है, हम टीके इंग्लैंड में बनवाने आते हैं, अभी टीके इंग्लैंड में बनवाने आते हैं. हमारा काम है जो मिलिट्री, हमारा मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो चीफ आर्मी स्टाफ है अब यूरोप में घूम रहे हैं. पाकिस्तान में अजी वहां पे क्या मातम पड़ी है, हम यूरोप में घूम रहे हैं और हमारी बेइज्जती हो रही है. बेइज्जती कर रहे हैं ना, तो इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है. जब इज्जत वाले काम करेंगे तो अल्लाह इज्जत देगा, जब जिल्लत वाले काम करेंगे तो अल्लाह जलील करेगा. तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. And one more similarity that I would like to really share with you. That Nasir, that she was at the age of 12, she was dropped out of school. And Stuart very nicely said, look, है मगर निशान नहीं लगता. मेरे मोहतरम और निहायत ही काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और हमारी इज्जत महब बहनों, अस्सलाम वालेकुम. थोड़ी सी मैं ब्रेक करना चाहूँगा इंग्लिश से, थोड़ी तर्जमानी उर्दू में, ताकि हमारा थोड़ा सा बैलेंस हो सके. अगर हम ब्रिटिश फ्रेंड से पाकिस्तान हैं तो अंग्रेज़ी हमारी ज़ुबान है, उर्दू हमारी ज़ुबान है, पंजाबी हमारी ज़ुबान है, सराइकी हमारी ज़ुबान है, पश्तो हमारी ज़ुबान है, मीरपुरी और पटवारी हमारी ज़ुबान है. तो ये हमारी सकाफत है, इसको हम कभी भूल नहीं सकते. I would like to thank the British friends of Pakistan, in particular हमारे जनाब मोहतरम अमजद साहब, हमारे ex MEP, माशाल्लाह. Give him a big round of applause, brothers and sisters, for the great effort of bringing us all together on this platform, on this summit, to share, to experience, to learn
from one another, to convey this message of peace. Wherever there's a pain and there's anguish and there's suffering, we as human beings should feel the pain and suffering for those around the world. This is what humanity is all about. This is what Islam is all about. Islam isn't about your own diaspora. It's a universal religion. Islam, the word Islam is peace. Whenever we say Assalamu alaikum, may peace be with you. But there's a misconception and misunderstanding and lack of education and ignorance that is embedded in our society, that we don't understand the cultures, we don't understand the religions. No religion preaches hate. It is the individuals that want to get the benefit for their own self-interest that preach hate. Islamophobia in this country is in mass, and we feel that every day. But not because of a few Muslims, just a handful of Muslims that will commit a crime, whether it's 7/7 bombing, whether it's grooming, whether it's the drugs. But unfortunately, the whole community is blemished because of the crime of a few. So we have to realize. I really thank Amjad Saab, by Farooq Saab, by Asif Saab, and the whole of British Friends of Pakistan. They're doing a wonderful work to bring in everybody here, and that we're sharing. We're talking about things that are really, really close to us, that really affect our lives every day. And this is important. How many times do we actually get together in a summit like this and talk about these issues? There's a serious drug issue in our community. There's a serious counseling that needs to be done to divert our young people into the right direction. Our elders came with a different perception, with a different vision. It was economical migration. That's what they came for. They heard after the Second World War, Britain wanted manpower. The Pakistanis, the Africans, the Indians, the Bangladeshis, and the Commonwealth and the world aside came here, and blood and sweat was thrown in the Industrial Revolution in this country, and you witnessed that. For the betterment of Britain, and for better economics. So brothers and sisters, we owe to Britain. I am a proud British Pakistani. I call myself British first because I'm proud to be British. Why? Because Britain has given me that opportunity. Britain has given me that platform. Britain has given me self-respect. Britain has given me self-esteem to go around the world and to be proud of where I'm from. I went to UAE and I was in a shop, and this gentleman walked into the shop with a long kurta, like an Arabic guy, walked into the shop, and I was talking to somebody, and he says to me, I says to him, how are you doing, brother, you okay? He says to me, he came in, and he said, why are you shouting? I said, I'm not shouting. He said, you're shouting? I said, I'm only talking to somebody. Is that a shout to you? He says, yes, you're shouting. I said, no. He says, I'm a police. I said, where does it say on your face? Or do you have a badge to say that you're police? I don't know you're police. But anyway, even if you're police, what have I done wrong? That you're telling me to shut up? What have I done? What crime have I committed? He says to me, you talk too much. Out of my wallet, my British, the license that I gave him. He says, you're from Britain. I says, yes, I am. I'm proud to be. That's why you're talking like this. Because all the rest of them were bowing their head and saying nothing in silence. That day, I tell you one thing, I felt proud to be British. I'm proud to be British because Britain has given us the values, a platform. Stuart and Nasha, we're proud of you. We need people like them in the corridors of Parliament to take our voices, to take our concerns to the corridors of Parliament, to say the right things. Because these people are decision makers, and we respect them, we honor them, and please support them all the way and forever. It doesn't matter whether it's conservative or Labour. They all represent our communities, and we have to be